Dear learned friends, when I stand before you on this unique occasion of a very uniquely devised program by the MIT World Peace University on research, innovation, design and entrepreneurship development. And what a good fortune, friends, for all of you that we have the most eminent guests to advise you, speak to you the words of wisdom. Honorable Sri Samir Somaiya Sahab, who has been heading not only an industry, but the very unique institutions in the field of education, engineering, medical, management, pharmacy and whatnot. I am reminded of 1983 when this institution was established, and it was this family of Somaiya group who was given the very special permission by the then Chief Minister of Maharashtra, Vasant Patil, specially calling Somaiya Seth and asking him to do something in the field of education. Vasant Patil, who had no formal education, he was hardly 4th standard fail, but with a great vision and insight. The person made a revolution for the state of Maharashtra. Unfortunately, MIT institution was one of them. And friends, I can only very briefly tell you that when I listened to Mr. Sekhar Mande Sahab and the great international speaker, Mr. Avinash Guldajani Sahab, and my esteemed friend Sanjay Upadhyay, and to the passion and fire with which Mr. Rahul and Mangesh spoke, their passion and fire, I repeat the word, for doing something very unique for what this Mother India stands for. To develop a holistic, peace-loving society, to develop a culture of peace. But the unique combination has been discussed in this campus for the last almost 40 years, when we have been saying that the journey is from philosopher Saint Jnaneshwara to Albert Einstein. क्या बात है भाई, ये कैसे संभव हो सकता है? A boy of only 16 years age, 730 years back, speaking the most scientific, logical and philosophical words of wisdom. I repeat, most scientific, logical and philosophical words for the well-being of the mankind. Engineer होने के नाते, I do understand the very equation of what entropy stands for, what this E equal to mc square stands for, spoken by the greatest scientist of the last century, Albert Einstein. But let me very briefly make a mention to you, friends, that I myself, I said to you day before, to some other group of students, I never wanted to be an engineer myself, but see the beauty of life. A person who doesn't want to become an engineer becomes an engineer, becomes a teacher, a professor, starts MIT, and speaks the language of Sant Jnaneshwar to Einstein. Vaishnav होने के नाते, I have read all the religious scriptures, mostly the Bhagavad Gita, Jnaneshwari Gatha of Sant Tukaram Maharaj. मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि पहले पढ़ के तो देखो, then call it as a blind faith. All the religious scriptures are nothing but the life guiding scriptures, ऐसे कहा जाता है. ये नई दिशा है भाई.
मैं आपको अपील करता हूँ. I am not advising you or trying to teach or preach, but I am making an appeal, even though you are youngsters sitting along with your learned teachers in front of you and the very great men sitting on the dais. I am making an appeal to you, friends. The time has come when I would like to make a mention to you the same words again. I do understand only that much part of it. But the great noble son of India, Swami Vivekananda, कभी पढ़ के देखो, भाषा देखो, and the words of wisdom which he spoke in 1893, 11 September, you know it very well. While addressing that parliament, he said that time to the world community, all the topmost delegates of America and the world are gathered together, and he's speaking and talking to them. But when he said, you know it very well, friends, but when he says, my sisters and brothers of America and the entire world, the moment he said this, all the audience got up and started giving a great applause for the words which he spoke further. He had uttered one sentence to all of them, and he said, please remember, friends, union of science and religion / spirituality alone will help to bring harmony and peace to mankind. Vishwa Shanti ki baat hai. There is a second sentence which he says to them. That time our country, our mother India, was under the clutches of the British. I am not blaming anybody. But British के कब्जे में होने के नाते Swami Vivekananda speaks one more sentence. And he makes an appeal to the whole world community and to the Indians especially. जो भारतीय लोग हैं, इंडियन लोग हैं, दुनिया के स्कॉलर्स है, थिंकर्स है, फिलोसोफर्स है, men of religion है, men of philosophy है. He is making an appeal. And he says, give me a few men with the muscles of iron and nerves of steel, and I'll change the face of India, my mother India. मेरी भारत माता का चेहरा बदल दूंगा. कितनी सीधी बात है, लेकिन कैसा अपीलिंग है देखो. समझने की कोशिश करो. 1893 की बात चल रही है. And in the year 1897, the same great noble son of you, your elder brother, addressing again the people of the world, he makes a prophecy. भविष्यवाणी बोली जाती है. क्या भविष्यवाणी है? विवेकानंद ने कहा, after 50 years from today onwards, साल है 1897, 50 साल ऐड करो. And he said, my mother India will become free from the clutches of the British. भविष्यवाणी बोली गई. आपको मालूम है 1947, 15th of August, our mother India became free from the clutches of the British. And thereafter the journey of 75 years now, and the world is waiting. Let me tell you again, honestly, especially on the background of this coronavirus, just before 2 years, when the world was hiding behind the doors, all the temples, the masjids, the dargah, जो भी पूजा घर है, उनके दरवाजे बंद थे भाई. क्या कारण क्या है? What the reason behind? किसका डर है? All the Security Council members of United Nations, the President of America, China, Russia, including India, सारे लोग दरवाजे के पीछे बंद है भाई. डर था वो एक ऐसी शक्ति जिसे कोरोना बोलो, कोविड-19 बोलो. डू यू नो दैट व्हेन वुहान की बात होती है तो चाइना में जब कैसे पैदा हुआ? वॉज इट अ नेचुरल वन और अ मैन मेड वन? लेबोरेटरी में पैदा हुआ क्या किसी निसर्ग ने निकाला है? यू मस्ट नो फ्रेंड्स द रियल स्ट्रेंथ, हॉरिफाइंग स्ट्रेंथ ऑफ किलिंग द लाइफ ऑन दिस अर्थ
was only 20%. One of the great scientists of that laboratory was known to us through UK. And he had made a conversation with MIT and gave a story actually. But कितना डर था भाई, मरने का डर है, कौन सी शक्ति है वो? हमारे संत तुकाराम महाराज ने कहा, अणु रेणु थोकड़ा तुका आकाशा एवड़ा. I am the smallest of the smallest of the small particle of the universe. But what type of particle which can encompass the entire universe? ये साइंटिफिक है भाई, इसको अंधश्रद्धा मत कहो. अध्यात्म शास्त्र और वैज्ञानिक शास्त्र एकम सत विप्रा बहुधा वदंती. द अल्टीमेट ट्रुथ इज वन एंड ओनली वन. कोई राम कहो, रहीम कहो, जीसस कहो, बुद्धा कहो, लेकिन अल्टीमेटली गांधी और बुद्धा का सत्य और अहिंसा का संदेश, पंचशील का संदेश दुनिया को राह दिखाएगा. एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू लर्न. And what is your duty and my duty? My appeal to you, friends, understand the purpose of this very conference. Understand the people who have spoken here. Rahul, Mangesh, and the entire team of the deans, directors, and the professors and researchers, they have taken a lead. मैं धन्यवाद देता हूँ ये सबको कि आप समझने की कोशिश करो स्वयं को. अभी लास्ट सेंटेंस में कहूँगा, मन शांति की बात कभी कभी बोली जाती है. क्या मन क्या है भाई? व्हाट इज मेंट बाय माइंड? मुझे जहाँ भी मैं जाता हूँ दुनिया में, आई हैड द फॉर्चून ऑफ विजिटिंग ऑल द ग्रेट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. क्वेश्चन पूछा जाता है. MIT बोस्टन में, MIT अमेरिका में की नोट स्पीच है. उन्होंने पूछा, सर डू यू नो, आप शांति की बात करते हो, हैव यू गॉट पीस टू योर माइंड? लोगों ने मुझे पूछा कि आपको शांति है क्या? मुझे उत्तर देना पड़ा, नहीं, पूरी तरह से नहीं. लेकिन मनस शांति की बात हो तो क्वेश्चन पूछा गया, डिस्कशन वाज गोइंग ऑन, व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ माइंड, ऐसा पूछा गया. मन की केमिस्ट्री क्या है भाई? पता नहीं. आत्मा का स्वरूप क्या है? What is the nature of the soul and the spirit? And there have been so much of discussion on this issue which you can make. You are all engineering students, management students, science, chemistry, physics, IT, computer, Google, Facebook, you take any name. What has been proved today, let me tell you friends, the greatest scientists like Vijay Bhatkar, Schrodinger, Penrose, the greatest scientists of today, they are appealing to us, all teachers, that we should start the schools of consciousness and reality. What is that reality? What is the ultimate truth? वो ईश्वर का रूप है. ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, वो शक्ति है भाई, इनविजिबल है. And each and every small living cell has the same body, the same brain, same आत्मा है और मन भी है. लेकिन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस लाइक अस, सोमया साहब आपके लिए भी बोल रहा हूँ, आपकी संस्था इसमें अच्छा काम करती है. जहाँ पर यह बुद्धि और आत्मा की बात होती है, तो दूसरा जो भाग है आत्मा और मन, उसका चिंतन अध्यात्म शास्त्र बोला जाता है. उस पर ध्यान दे दो भाई थोड़ा, अपने लिए, अपनी जीवनी, घर हो, संस्था हो या और कोई इंस्टीट्यूशन हो या इवन राजनीति भी हो, गर्व मत करो. डोंट बी इगोइस्टिक एट ऑल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज व्हाट यू स्टैंड फॉर. ये आत्मा का स्वरूप क्या है, ये भी साइंटिफिक है भाई. मैं इंजीनियर होने के नाते, बीइंग ए इंजीनियर, आई डू अंडरस्टैंड दिस वेरी वर्ड्स लाइक एंट्रोपी and the Google and Facebook, everything. But after studying this, at least I have come to some conclusion to myself, and that's why the journey. ये पीछे का फोटो तो देखो, क्या सैक्रिफाइस होता है, क्या डिवोशन का मतलब क्या होता है. और अपने मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये वचन है ना. ज्ञानमयो विज्ञानमयो, ये भी वचन है.
पुराना है, लेकिन इसी धरती पर भारतीय संस्कृति, परंपरा और तत्वज्ञान के माध्यम से वैज्ञानिक सत्य बोला गया, वो डोम बन गया। मैंने नहीं किया भाई, वो हो गया है। आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, वी आर एन इंस्टीट्यूशन टू बी इंस्ट्रूमेंटल। एंड फाइनली जिसको कहा गया दुनिया बोल रही है। यू सॉ दैट ब्रीफ फिल्म, उसमें सीधी बात है, अध्यात्म शास्त्र की वैज्ञानिक प्रयोगशाला है, संदेश देता है। मैं नहीं बोल रहा, ये दुनिया बोल रही है। And they are telling you that what you have done for the world is the spiritually oriented scientific laboratory है। इसका अपने को नाज होना चाहिए, लेकिन we should be very proud to promote this cause of culture of peace through the appropriate understanding of the role of science and spirituality. Thank you, friends. Thank you so much.